in Sri Lanka. Arvind ji, namaste. Can you take us through how did this build up, this Araglaya build up like this? It seems to be leaderless. It's a student, youth, youngster movement that we are seeing. And what are their primary demands and where is the hitch? राइट यह जो स्थिति अराजकता की वहाँ बहुत ही खतरनाक स्थिति है जी जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो हालत बहुत अच्छा हो सकते हैं एंड एक्चुअली नाउ लीडर ऑफ द ओकेशंस एंड सम अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व in current situations they should understand they shall understand that now they should think beyond the politics और उनकी यह सोचने की जरूरत है कि अभी उन्हें देश के बारे में सोचना होगा क्योंकि अगर अभी हिंसा जितना खतरनाक रूप नहीं ले रही है अगर उस हिंसा ने खतरनाक रूप ले लिया तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि वह मैं यह कहना होगा कि हम इस तरह से इस पूरे जो आर्थिक पेश कर रहे हैं और उन जनता से एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा जी पर अरविंद जी एक बात बताइए अभी वहां ग्राउंड पर परिस्थिति कितनी गंभीर है यहाँ पर तो भीड़ जमा है जहां गोल्फ फेस और प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है पर रेस्ट ऑफ कोलंबो और फिर अगर श्रीलंका बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करें प्रोविंसेस की बात करें तो वहां क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर कितनी किल्लत है फूड की फ्यूल की पानी की वहाँ जो श्रीलंका में कुछ दोस्तों से बात हो रही है उससे लग रहा है कि स्थितियां तो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है और लोग बहुत जबरदस्त तरीके से परेशान हो रहे हैं जिसकी उन्हें आदत नहीं है और जब आप उनके एक जो चलती हुई जिंदगी में जब खलल पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोग सड़कों पे आएंगे और वह प्रोटेस्ट भी करेंगे वह सरकार के खिलाफ और सरकार से वो प्रश्न करेंगे जो कि मूलतः उनका हक है तो वो करेंगे तो स्थिति तो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है पर यह वाकई संतोष वाली बात है कि अभी तक कोई बहुत बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है अभी तक लोगों का या जो है तो उसको अभी भी मौका है मुझे लगता है कि सभी को चाहे वो विपक्ष के नेता हो या वहाँ के और भी जो नीति नियंता हो उन सबको साथ में बैठकर यह तय करना चाहिए कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए अभी देश बड़ा होना चाहिए उनके लिए और व्यक्तिगत हितों को उन्हें एक तरफ रखना चाहिए अभी वहां के स्पीकर महिंदा अभयवर्धना ने 5:30 बजे ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग बुलाई है 5:30 बजे श्रीलंका टाइम आपको लगता है आज शाम तक कोई ना कोई फैसला हो जाएगा और प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आज फैसला नहीं हुआ तो परिस्थिति बिगड़ सकती है अभी तक तो लार्जली ये लोग पीसफुल रहे हैं सारे प्रोटेस्टर्स यह कहना तो बेहद मुश्किल है क्योंकि यह तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा और निश्चित रूप से इसमें जो अलग अलग जो लोगों के इंटरेस्ट हैं वह काम करेंगे और वह उसी हिसाब से वह करेंगे तो हो सकता है कि वह कुछ और दिन तक तुरंत कोई फैसला हो जाएगा इसकी उम्मीद कम से कम मुझे तो बहुत कम लग रही है हो सकता है कि इसमें कुछ और दिन लगे और तब तक हम यही उम्मीद या आशा कर सकते हैं कि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े क्योंकि अराजकता किसी भी समाज या किसी भी देश के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हो सकती जी Dr. Arvind Singh ji, thank you very much for speaking with us. I'm just going to quickly see if we have Purnima with us again and try and get one final update with her as to is there an expectation of a resolution and a decision in favor of what the protesters are demanding and will this situation be resolved whether before it further snowballs because with each passing day ladies and gentlemen the access to basics ration food supplies, medical supplies, fuel, water is going to get critical. And it's not just Colombo, but it's going to be pan Sri Lanka. And that could trigger a civil war. The angst that the people are showing against the ruling disposition could turn towards open loot and vandalism on the streets and an open civil war, which is a situation that the nation just does not want to face. And clearly, the Tri-Forces would also want to avoid at this point. But why is Ranil Wickremesinghe continuing to hang on? Is there merit in what Sajith Premadasa has just tweeted where he says one party with one MP is now the acting president and how is that democracy and is that not a farce? And should the Rajapaksas let go
how is it that they can be fully yanked off? Is there a decision likely this evening? Purnima is with us. Purnima, 5:30 p.m. Sri Lanka time is when the speaker has called for this meeting. Will everybody attend? Purnima, if you can hear me, will all the parties attend this all-party meeting called by the speaker? Because earlier the opposition has alleged that even the speaker has to go because he is also of the ruling disposition. Well, we'll have to see if all the parties attend, because the opposition parties here are not happy with the way things have panned out. While everyone was waiting for that historic announcement that Gotabaya Rajapaksa is going to resign, he's made it very clear that in his absence, it is going to be Ranil Wickremesinghe as the acting president. And as per the constitution, if it's not Ranil, then it has to be the speaker. Sajid Premadasa, who aspires to get the top post, who aspires to be the president of the country, has very little support of the other parties, and he does not have the numbers also, which is why they are now not really hoping for better things to happen. And also the fact that protests are only snowballing because they want Ranil Wickremesinghe to resign, and they are not happy with the way things are panning out, especially the opposition parties and protesters here. Sajid Premadasa also now saying that if the speaker is also someone who's closely associated with Rajapaksa's, therefore we'll have to wait and see if Sajid sends his party members to attend. But it's going to be very significant because they will then decide what next, what the future holds for Sri Lanka. Therefore, all-party meeting is the need of the hour, which is why Defence Chief has also made it very clear. But whether the opposition parties will attend in the next few minutes, there will be more clarity. Sajid Premadasa are not too confident of a positive note for himself in this particular scenario.